माय डियर व्यूअर्स, आपको यदि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लोड कर सकते हैं। तो आपकी मन मुताबिक आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये मेरा जो प्रिपरेशन है ख़ास तरीके से हुआ है। आप स्कूल एवं कॉलेज में यदि भाग लेना चाहते तो आपको श्योर फर्स्ट पोजीशन आपको प्रोवाइड करेगा। आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो पीडीएफ है उसका लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट वार्म सैल्यूट टू ऑल माय डियर टीचर्स, accept my namaskar and very good morning to all of my friends. Azadi ka Amrut Mahotsav will create landmark history for world. Thus I feel grateful that I am a part of this occasion. जिंदगी बादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरी जीना मरने की बदौलत होगा। For the freedom millions of sacrifice by our national heroes gave wings to our dream. India, the सोने की चिड़िया, got imprisoned by various foreign powers like Arabs, Mongols, Portuguese, France, British and many more. India became an unshaped ghost and Bharat Mata cried for her emancipation. From the arrival of British till 1947, India faced brutality, frequent famine, exploitative tax multiplies the plight of Indians. India made its first attempt in 1857 known as Sepoy Mutiny. Rani Lakshmibai, Mangal Pandey and other youth leaders sacrificed their lives and planted the seed of nationalism. Dadabhai Naroji started agitation against the drain of wealth policy. Chapekar brothers, Tilakji, Madanlal Dhingra and other mass leaders ignited the fire of self-sacrifice. Freedom is my birthright. This statement by Tilak was a slap on brutal force. Alipur case proved that even teenagers also in the race of independence. Aurobindo Ghosh, Khudiram Bose, Praful Chaki and others raised their voice. Aurobindo Ghosh said, nationalism is our religion. Gandhiji detected the iron hand in a velvet glove and proved the history of blessings in disguised fault. From Champaran movement to Quit India movement, Gandhi played an unprecedented inning against British Empire. Sun never sets in the British Empire. To prove white man supremacy theory, India developed white man burden theory. The leaders like Chandrasekhar Azad, Asafullah Khan, Ram Prasad Bismil, Bhagat Singh struck at the root of British Empire. Youth leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose developed the concept of Swaraj, and in Lahore session of Congress, India observed Purna Swaraj Divas. Women leaders like Pritilata Wadekar, Madam Bikaji Kama, Rani Gaidenlu, Sarojini Naidu and others become leader of the mass. Sarada Devi, known as Devaki because cruel British did not left the pregnant lady who gave birth in jail. Janiwala Bagh, open firing, lathi charge during Simon Gobek rally and civil disobedience movement proved the brutality of English power. अब जो तेरा खून न खोला खून नहीं वो पानी है, देश की हित काम न आए बेकार वो जबानी है. भगत सिंह stated these words and fought against white man's stigma. Dog and Indians are not allowed. India got independence in 1947 and traced with destiny. India celebrates independence on 15th August to commemorate our national heroes and their sacrifice. India celebrates Azadi Ka Amrut Mahotsav and I hope may all Indians टेक पार्ट इन द महोत्सव. जय हिंद, जय भारत. तो देखिए आपकी
आवश्यकता से अनुसार आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे आप स्टैंड लेंगे तो आपको जो टॉकिंग मच एफिशिएंट होगा। और आप ऐसे में भी भाग लेते हो तो आपका ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त होगा। थैंक यू। आप उसको डाउनलोड कर दीजिए PDF को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो।